अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will be speaking on the topic of dieting and weight control, and this does not mean that the speaker is fully fit. Even the speaker is struggling since years to maintain his weight and start the Islamic dieting regulations. Allah has given us some titles in the Quran. अल्लाह ने हमको कुछ लक़ब दिए और उस among those titles is Ummatul Wast, okay, the middle ummah, the balanced ummah, the ummah that will be witness over mankind. Allah says in the Quran in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 143, Allah says وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسْتَلِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. So you are the witness over mankind. So we are the leaders, we are the guide, we are the who guide people towards good things. Another title in the Quran, another responsibility in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 104, Allah says وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, and let there arise out of you a band of people inviting to all that is good and forbidding what is wrong. हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें. Another very important title given is Khairul Ummah, the best of people. Allah says in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 110, Allah says Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. You are the best of people evolved for mankind. Why? Because you invite people towards the truth and forbid what is wrong. Right? So, as a Khairul Ummah, to fulfill this great responsibility, we have to be fit spiritually as well as physically. Imagine if we ourselves are weak, diseased, dependent, then how will we fulfill our responsibility? हम खुद ही हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हम खुद ही बीमार हैं, हम खुद ही दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो कैसे हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे? It is very important to maintain ourselves, the Muslims to maintain ourselves fit, physically fit and even spiritually. If we look into the Quran and Sunnah, it is visibly clear that a lot of stress has been placed on physical fitness as well. This talk intends to inspire the people, especially Muslims, to be concerned about their health, to be concerned about their physical fitness. And for us Muslims, the Islamic approach is the best approach. We have guidance in every aspect of our lives. Stress management, anger management, personality development. Whatever we do, we have the best guidance is the Quran and Sunnah. And even this aspect of physical fitness, inshallah, we'll see inshallah from an Islamic perspective. The topic of this evening's talk is the Islamic approach to dieting and weight control. Islam encourages us to keep our body healthy and fit. Muslims must take care of their physical health as well as their spiritual health, because our bodies are amana from Allah. We cannot abuse our bodies, we cannot be careless about our bodies. It's amana of Allah, we should look after it. 3 of the 5 pillars of faith require physical fitness. 5 सुतून में से 3 जो सुतून है उसमें फिजिकल फिटनेस लगती है. नमाज पढ़ने के लिए वो फिजिकल फिटनेस लगती है, रोज़ा रखने के लिए फिजिकल फिटनेस लगती है, हज में तो 7-8 दिन जो है पूरा हमको फिजिकल एक्सर्शन करना पड़ता है. तो 3
सुतून जो है, the 3 pillars of Islam, we have to be physically fit. Why is food important? Allah loves His creation. Allah loves us, and that is why He has mentioned the importance of food. He has included in the Quran and in the Sunnah the types of food which we should eat and which we should avoid. In a hadith in Sahih al-Bukhari, a man used to eat much. But after he embraced Islam, he began to eat less. And this was mentioned to the Prophet. And the Prophet said, a believer eats in one intestine. That is, he eats moderately, less. And the disbeliever eats in 7 intestines. That is, he eats much. Imagine the importance of dieting. Right? It is connected with faith. The Prophet advised that food was the primary reason for illness. If we eat too much or if we eat the wrong type of food, we'll be sick. Now, what were the dietary and eating habits of the Prophet? What is mentioned in the Sunnah, inshallah, we'll see. And unfortunately, we see that most of the hotels, the restaurants, the pawn shops, the canteens are found in Muslim areas. And this is a fact. Right? And if we go outside here, we can see this phenomena. Right? The World Obesity Day is observed on 4th March. Diseases associated with obesity: overweight, blood pressure, diabetes, heart ailments, arthritis, breathing problems, cancers, strokes, etc. And reasons are unhealthy food, overeating, and lack of physical exercise. Overweight and obesity are defined as abnormal fat accumulation that may impair your health. Fat जो हमारे बॉडी में accumulate होती है, जमा होती है, that is called overweight or obesity. There is a thing called BMI, body mass index. So if you know this, body mass index is a simple index for weight for height that is commonly used to classify overweight and obesity in adults. BMI is a person's weight in kilogram divided by the square of his height. If your BMI is equal or greater to 25, you are overweight. आपका वजन ज़्यादा है. And if it is greater than 30, then you are obese. According to a report in India Today, 5th March 2021, in 2016, 34.3 million people were found to be obese in India. According to a study published in the journal Lancet, India is the 3rd most obese country in the world after America and China. One third of the world's population is obese. According to a report in the Asian News Network, 21st March 2021, hospitalized COVID-19 patients with obesity were significantly more likely to be in the ICU for more days and more chances to die. And this is a fact. First, the doctors used to tell, and even my son is a doctor, alhamdulillah, and he used to tell that first the doctors told diabetes के वजह, it is the comorbidity. Diabetes की वजह से COVID-19 patient को जल्दी होता है. फिर then the doctors began saying that blood pressure is more dangerous. Then the doctors said that obesity is the most dangerous comorbidity. Obese person को COVID हो गया, ICU में चला गया, तो very less chances of coming back. And this was proven according to the news reports. People with obesity who are hospitalized with COVID have a longer stay in the ICU. According to a report in Time News Network, 4th March 2021, obesity is found to be a major factor behind nearly half of all COVID deaths. Times News Network, 4th March 2021. Situation is so alarming that more than 50% of the children are obese, are struggling with obesity. According to studies carried out by the Global Obesity Forum, obesity is found to be the chief culprit
behind more than 50% of COVID-19 deaths. In today's world, one of the most common fitness issues that we face is obesity, overweight. Now, what is the Islamic view? Islam क्या कहता है इसके बारे में? Overeating causes lethargy, drowsiness, laziness. We can't concentrate. जैसे overeat करते हैं हम लोग, blood circulation is more is diverted towards our stomach for digestion, and blood circulation is less to the brain, and that is why we feel drowsy, we feel lazy. The consequences of this laziness is that we cannot do our work properly, and as Muslims we cannot worship properly. So this talk is not about looking handsome or being fit, physically fit, and no. The first and foremost, it can be there, alhamdulillah, looking good is a good thing. The first and foremost is हमारी इबादत करने में हमारे आसानी होनी चाहिए. If we are physically fit, slim, ज़्यादा आसानी से हम इबादत कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं, ज़्यादा आसानी से नफली रोज़े रख सकते हैं, ज़्यादा आसानी से नफली इबादतें कर सकते हैं, और इन्हें बहुत आसान हो जाता है. We don't realize when we are overweight, we don't realize हम इबादत कर, लेकिन जब हम हमारा वेट कम करेंगे तब हम रियलाइज होगा कितना ईजी हो रहा है. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट? हमारी इबादत ज्यादा हो रही है, हमारे अगर हम फिजिकली फिट है तो ये सबसे अच्छा मकसद है. अल्लाह कहते हैं सूरा अल-मुमिनून, अल्लाह सेज इन सूरा अल-मुमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 51, अल्लाह सेज ईट द गुड फूड्स दैट अल्लाह हैज प्रोवाइडेड. अल्लाह सेज इन सूरा अल-अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 31, अल्लाह सेज eat and drink but waste not by extravagance. खाओ पियो लेकिन वेस्ट मत करो, हद से आगे मत बढ़ो. Certainly Allah does not like al-musrifun. Allah says in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 172, Allah says ya ayyuhal lazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. O you who have believed, eat from the good things which we have provided for you, and be grateful to Allah if it is Him that you worship. तो सहाबा देखेंगे, सहाबा कितने स्ट्रॉन्ग थे. मोस्ट ऑफ द बैटल्स फॉट, जंग ओहद, जंग बद्र, जंग खंदक. मोस्ट ऑफ द सहाबा, द प्रोमिनेंट सहाबा वर above 40, 45, 50. The sahabi who was in the army of Muawiyah raziyallahu anhu, when he sent an army to Constantinople in Turkey, one of the sahabi was Abu Ayyub al-Ansari. What was his age? 80 years. 80 years he traveled from Medina to Constantinople. Imagine 8 years में हमारा हाल क्या होता है? हमारा हाल क्या होता है? His grave is still in Constantinople, near the gates of Constantinople. Abu Ayyub al-Ansari. Allah says in Surah Al-Ma'idah chapter number 5 verse number 5, Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu. This day all good foods have been made lawful to you. There is a hadith in Sahih al-Bukhari, hadith number 6412. The Prophet, peace be upon him, said, there are two blessings which many people lose because they are careless: health and free time. Allah's Prophet said, बहुत से लोग अपने लापरवाही की वजह से दो नियामतें खो देते हैं, health और अपना free time. Another hadith in Sahih al-Bukhari, Allah's Prophet said, a strong believer is better and dearer to Allah than the weak one. And both are good, but Allah likes the strong believer, spiritually strong as well as physically strong. Why? Physically strong रहेंगे तो दूसरों के काम आएंगे, उम्मत के काम आएंगे. हम खुद ही डिपेंडेंट हैं, हम खुद ही वीक हैं, हम खुद ही हमारा हजारों रुपया, हमारा पैसा हम मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं. हम क्या काम आएंगे उम्मत के? राइट? वी शुड बी fit physically and spiritually as well. There is a hadith in Tirmidhi. Allah's Prophet said, whosoever begins the day in his home, he wakes up in his home secure, with good health and possessing provision for the day, he is as if he possessed the whole world. Allah's Prophet is telling health is one of the main aspects
happiness. It is narrated from Hazrat Ibn Umar Raziyallahu anhu. The Prophet said, teach your children swimming, archery and horse riding. They are physical sports. And today our children, unfortunately, they are busy with the mobile phones, the computers. They can use, but not for, wasting time on games and all. The Prophet, peace be upon him, said, no man fills a container worse than his stomach. A few morsels that keep his back straight are sufficient for him. If he has to, then he should keep 1/3 for food, 1/3 for water, and 1/3 for breathing. That is air. See the statement. No man fills a container worse than his stomach. सबसे बुरी चीज अगर भरने वाली हो तो वो पेट है, और ज्यादातर बीमारियां ज्यादा खाने की वजह से। बहुत सिंपल है, ज्यादातर बीमारियां इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा सब में बुरी चीज पेट भर के खाना। Now, what are the views of the Sahaba and the Salaf on obesity? Al-Hasan reported, Umar ibn al-Khattab Raziyallahu anhu said, he saw a man with a large belly. And Umar Raziyallahu anhu asked this man, what is this? That man says, this is the barakah of Allah. Allah ki niyamat. Umar Raziyallahu anhu said, no, rather it is a punishment of Allah. हम कहते हैं ना, अरे दुबला नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाते पीते घर का दिखना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि लोग समझेंगे कर्जा हो गया भाई इतना दुबला मत हो जाए. We have wrong ideas. It is reported from Ibn Sirin, may Allah have mercy on him, that a man once said to Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, can we offer you some jawarish? क्या हम आपके सामने जवारिश पेश करें? Abdullah ibn Umar Raziyallahu anhu replies, what is jawarish? ये jawarish क्या है? So the man says, this is appetizer. We eat that when we are full. We eat that. जैसे कि हम लोग सौंफ खाते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं. जवारिश. अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, I have not eaten my fill for 4 months. Not because I cannot find food, but because I have lived with those people who used to eat their fill at times and go hungry at times. मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ जो कभी खाते थे कभी भूखे रह जाते थे. मुझे जवारिश खाने की जरूरत नहीं, एपेटाइजर खाने की जरूरत नहीं. It is reported that Muhammad ibn Sirin rahimullah said, a man from the companions of the Prophet would sometimes go 3 days without finding any food. Sahaba 3 दिन तक कुछ भी नहीं मिलता था. And because of that he used to grill some animal skin and eat that. चमड़ी को भून के वो खा लेता. If he couldn't find anything at all, he would tie a rock on his stomach to keep his back straight. It is reported that Al-Hasan al-Basri rahimullah, he said, by Allah, I have lived amongst people who never ordered food to be prepared. If food was presented to one of them, they would eat. Otherwise, they would be silent. And they would not care that it should be hot or cold. आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, आज वो डील हो रहा है. कहते हैं आराम नहीं है, सही है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो है, सलफ के एग्जाम्पल्स जो हैं, गर्म है, ध्यान देते नहीं थे. वो खाने पे इतना ज़्यादा केयर नहीं करते. It is reported that Al-Fudayl bin Ayyad rahimullah, he said, 2 things harden the heart: too much talking and too much food. ज़्यादा खाने से दिल सख्त हो जाता है. अच्छी बात का असर हम पे नहीं होता है. अच्छी बात करने, नेकी का काम करने के लिए हम लपकते नहीं हैं, हम पीछे हटते हैं. It is reported from Malik bin Dinar raziyallahu anhu, he said, it is unfitting for a believer that his belly becomes his greatest concern. Unfortunately, हमारा एक मेन कंसर्न होता है आज क्या बनने वाला है, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा. It's the greatest concern. He said, whoever controls his belly controls all good deeds. जो अपने डाइट पे, अपने पेट पे कंट्रोल करेगा, वो सब चीज़ पे कंट्रोल कर सकेगा. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैं बैठ के बोल रहा हूँ इसके मतलब ये नहीं कि मैं सब करता हूँ. खाना कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट.
जैसे ह्यूमन नेचर, इंसान की फितरत है. It is reported that the Tabai Uqba bin Wassaj rahimullah, he was once invited to a wedding reception, walima, and there he found that there were many dishes served and people were eating from here and there, and he started crying. People asked him, why are you crying? So he said, I found the first part of the ummah, that is the Sahaba, fearing all upon themselves. सहाबा जो है इतना बेहतरीन ऐश और आराम, बेहतरीन खाने से परहेज करते, डरते थे कहीं हमको इतने सारे नियामतें ना मिले, हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा. एंड ही एट ओनली फ्रॉम वन डिश. फिर वो ताबी जो है सिर्फ एक ही डिश खाते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइटिंग? देयर आर मेनी बेनिफिट्स, वी कैन स्पीक फॉर आवर्स on that, but the main benefits are weight loss. It makes breathing easier as compared to the breathing of an obese person. We don't realize that. Obese person don't realize. हमें तकलीफ होती है, मतलब सांस लेना, आदत है हमको, लेकिन जब हम सही में वेट लॉस होगा हमारा, तो हमें पता चलेगा, मर्द या हो या औरत हो, कि हम ब्रीदिंग इजी तरीके से कर सकते हैं. वर्शिप बिकम्स ईजियर. एज आई सेड, इबादत करना बहुत आसान हो जाता है. Second is losing weight may improve survival rate among those who have obesity related diseases, especially type 2 diabetes. Type 2 diabetes has become so common. सर्दी खांसी की ऐसा type 2 diabetes हो गया. शक्कर की बीमारी जो हम कॉमन कहते हैं, शुगर. इट इज अ साइलेंट किलर. एक बीमारी है, सारे बीमारियों का एक ही नाम है, टाइप 2 डायबिटीज. परहेज करना पड़ता है, खाना ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, राइट. कितने सारे मुश्किलें आती हैं. अगर आज के ज़माने में 50-60 साल के उम्र तक अगर एक आदमी को शुगर यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से अगर महफूज है, तो ही इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड. मैं तो बोलूँगा उसको पूरी नियामतें मिल गई. थर्ड इज ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस विथ वेट लॉस फॉर द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर. इवन हाई ब्लड प्रेशर हैज बिकम वेरी कॉमन. और अपना वेट रिड्यूस होगा तो ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल आ जाएगा. Dieting and exercising is good for the brain. Right? John J. Ratty, MD and Associate Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and author of the book A User's Guide to the Brain, says exercise is really for the brain, not the body. It affects your mood, vitality, alertness and feelings of well-being. Now, what are the tips on dieting, the Islamic tips on dieting and weight control? As a Muslim, every deed should begin with a good intention. हमें वेट, बहुत अच्छी बात है वेट कम करना, फिजिकली फिट रहना, लेकिन हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमें हमारी इबादत आसानी से और हम लोगों के काम आ सके. जो अल्लाह ने हमको जो खैरुल उम्मा का जो टाइटल दिया है, लोगों के लिए, उम्मत के लिए काम करने का, दीन के लिए, वो काम करने में हमें आसानी हो, ये हमारी नीयत होनी चाहिए. उसके बाद हम अच्छे दिखे, हैंडसम, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट निया शुड बी, वर्शिप शुड बी इजियर एंड वी शुड बी एबल टू डू more work for the ummah. The reward of the deeds, as the hadith says, the reward of deeds depends upon the intentions, and every person will get the reward according to what he has intended. Sahih al-Bukhari ki hadith. Point number 1, niya and start with bismillah. Whenever you have food, start with bismillah. Allah's Prophet commanded the people who complained that they never felt full to eat together, not separately, and to mention the name of Allah over the food so that they might have barakah. This is mentioned in Sunan Abu Dawud and Ibn Majah. We should also make dua that, oh Allah, help me in my journey on weight loss and dieting. Point number 2 is moderation is the key. Allah says in the Quran in Surah Al-Araf, chapter number 7, verse number 31, eat and drink but be not excessive. In practice, we can all individually determine by looking at the food कि how much will it take us to be full, और उसका 1/3 हम कर सकते हैं. अगर हम बिगिनिंग नहीं करते, 1/3 for food, 1/3 for water, 1/3 for air, बिगिनिंग में बहुत मुश्किल होगा, 1/3 तो हाफ कर सकते हैं, या फिर कम से कम जितना हमको नॉर्मल, ओवर ईटिंग मत करो, ज़्यादा मत. और उसका एक there is one key that chew the food slowly. It takes 20 minutes
for the brain to send the signal to the stomach that you are full, right? तो 20 मिनट का वक्फा रहता है पता चलने के लिए हम खाना मैंने हमारे लिए फुल, तो आहिस्ते खाना चाहिए। और एक आसान तरीका है, प्रैक्टिकल टिप है कि डोंट ईट विद द वेसल्स इन फ्रंट ऑफ। किचन में जाओ, अपनी प्लेट 1 या 2 प्लेट लेके, जितना हमको लगता है थोड़ा कम बिगिनिंग में, वो लेके बैठ जाओ, खाना खत्म करो, फिनिश। इफ यू सिट विद द वेसल्स इन फ्रंट ऑफ यू, बर्तन बड़े बड़े बर्तन लगे, देन वी डोंट हैव दैट आइडिया व्हेन कितना ले रहे हम लोग, बस ले रहे खा रहे। सब में आसान तरीके, सब में बेस्ट तरीके। किचन में जाओ, ले लो अपना पेट फुल करो, दस्तरखान पे आओ, खाओ, फिनिश। दैट इज योर लंच, दैट इज योर डिनर, फिनिश। प्रैक्टिकल टिप, बेस्ट। Okay, third point, eat and drink with your right hand. The shaitan eats with the left hand and drinks with the left hand. Many Muslims I have seen unfortunately left hand से drink करते, खाते तो नहीं है लेकिन लेफ्ट हैंड से ड्रिंक बहुत आसानी से करते। तो सिगरेट राइट हैंड से पीता है लेफ्ट हैंड से, लेकिन पानी जो है लेफ्ट हैंड से, ये शैतान बहकाता है, यानी हमें याद नहीं रहता। देखो आप जब एंटर करते हो सीधा पैर रख के एंटर होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। शैतान हमको बहका लेफ्ट हैंड से एंटर, लेफ्ट पैर से एंटर करते हैं, चाहे घर हो चाहे ऑफिस। ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, और फोर्थ पॉइंट इज ईट और ड्रिंक सिटिंग डाउन। बैठ के पानी पीना चाहिए। हम तो सुनते हैं बचपन से, लेकिन हमको इसकी अहमियत का पता नहीं। मुझे भी पता नहीं थी, आज मैं पढ़ा मैं एक रिपोर्ट, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क 3 फरवरी 2019, अब डेट लिख लो, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क 3 February 2019. The title of that news article was "Why you should never drink water standing up." Many points were mentioned. The important points are you don't get the required nutrition. Water में जो अच्छाई होती है वो आपको नहीं मिलती। It can be bad for you and put you at the risk of health problems. Times के न्यूज बता रहा हूँ। Toxins are not flushed out. वाटर का जो काम है, टॉक्सिन्स फ्लश आउट किडनीज में और दूसरे ऑर्गन से, दे आर नॉट फ्लश आउट इफ यू स्टैंड एंड ड्रिंक वाटर। लंग्स एंड हार्ट इज अफेक्टेड। इमेजिन ठहर के पानी पिएंगे तो आपके हार्ट पर असर होता है, आपके लिवर पे असर होता है, आपके हार्ट पे असर होता है। ये हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम्स रिपोर्ट, मेडिकल डॉक्टर्स आर सेइंग दैट। जॉइंट पेन्स, ये एक वजह है ठहर के पानी पीना। इमेजिन, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव गाइडेंस इन कुरान सुन्नह, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट टेक केयर टू लर्न फ्रॉम इट। फिफ्थ पॉइंट इज सिट स्ट्रेट, डू नॉट ईट व्हाइल रिक्लाइनिंग। टेक के पानी ना पियो और खाना भी मत खाओ। अल्लाह's prophet said in Sahih Bukhari, hadith number 5083, Allah's prophet said, I do not eat reclining. बैठ के straight, should sit straight. Ka'b ibn Malik, 6th point. Ka'b ibn Malik states the Prophet used to eat with 3 fingers, lick his hand before he wiped, as mentioned in Sahih Muslim. The sunnah is to eat with 3 fingers, but hard and fast. If the food is heavy, those type of food, we don't know what type of food. If our food is heavy and we require, no problem. But the sunnah is that, and we can use 4th or 5th fingers, no problem. It is mentioned in Sayyid Fath al-Bari, volume number 9, hadith number 578. Point number 7, eat together. The Prophet never ate alone. घर पे अपने वाइफ, किड्स, बच्चों के साथ बैठ के खा सकते हैं, if it is possible. नहीं कि ऐसा नहीं कि hard and fast, but see to it, try your best to sit together. Okay? Abdullah ibn Umar narrated, I heard my father say that the Messenger of Allah said, eat together and do not eat separately, for the blessing is in being together. बरकत जो है, बरका जो है, साथ में बैठ के खाने में। Point number 8, lick your fingers, don't leave any food on the plate. ये भी सुन्ना में है, जितना हमको लगता है उतना ही ले हम, right? Point number 9, eat and drink water slowly. Sip your water. You should not gulp your water. You should sip your water. The Prophet said to not drink water in one gulp like a camel. अल्लाह के रसूल ने कहा जल्दी जल्दी पानी मत पियो ऊंट के जैसा।
Instead, take small sips. Today, science shows that when a person drinks too much water in a short period of time, that can cause imbalance in blood electrolyte levels and experience dizziness. Drink water slowly so it will help your body absorb the fluids and get the most out of them. Point number 10, the blessing, Allah's Prophet said, the blessing descends in the middle of the food. So eat from the edges and do not eat from the middle. प्लेट में जो है एज से लेना चाहिए, बीच में से नहीं उठाना चाहिए. बर्तन भी जो है, बर्तन में जो हम लेते हैं राइस वगैरह, तो कॉर्नर से ले, डायरेक्ट बीच में से ना ले, क्योंकि बरकत वहाँ पे नाजिल. बरकत यानी सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बरकत यानी हमें फ़ायदा भी पहुँचता है उसका और नुकसान नहीं होता है, वो रिस्क का, वो खाने का. So these are the few tips and the foods mentioned in the Quran. There are many foods mentioned in the Quran. अगर important नहीं है तो अल्लाह ताला क्यों mention करता? Food is important. What you eat and what you avoid is important. That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran. Whole grains, lentils. Allah mentions meat like seafood, meat of domestic animals, bird meat, leafy green vegetables like cucumber, garlic, onion, lentils. Like cucumber, garlic, onion and lentils are mentioned in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 61. Fruits are mentioned, grapes, chapter number 2 verse number 266. Dates are mentioned, chapter number 6 verse number 141. Olives are mentioned, pomegranates are mentioned, bananas are mentioned, figs are mentioned. Foods loved by the Prophet. Gold, दूधी जो रहती है, जिसे कद्दू कहते हैं. Cold water, sweet cold water, shoulder meat, halwa, that is sweet. अल्लाह के रसूल को अच्छा लगता था. Honey, शहद. Some food and drink consumed by the Prophet were vinegar, watermelon, ghee, chicken, barley, milk, nabiz, dareed. ये हमें ध्यान रखने की सुन्ना में क्या क्या फूड्स आते हैं ताकि हमारी हेल्थ जो है, what the Prophet is the best example for us. जो भी करते हैं हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल. डेट्स के बारे में आता है. In a hadith mentioned in Sahih Muslim, the Prophet stressed the importance of dates as a major food item. He said, people in a house without dates are in a state of hunger. हम डेट्स की रमज़ान में ध्यान देते ज़्यादा, डेट्स आमतौर पे खाते नहीं, खाना चाहिए डेट्स. About honey, the Prophet said, the Prophet used to drink honey mixed with water on an empty stomach. सुबह उठने के साथ पानी में शहद मिला के पीते थे. And this is the secret of maintaining good health, that no one can understand except one who is intelligent and blessed. This is mentioned in Zad al-Ma'ad, volume number 4, article number 33 and 34. अल्लाह के रसूल सुबह उठने के साथ खाली पेट जो है पानी में, ठंडे पानी में शहद डाल के पीते थे. That is the secret of good health. About कलौंजी, कलौंजी पता है, कलौंजी भी खाना इस्तेमाल करना चाहिए. About Nigella sativa black seed, that is called black seed. It is mentioned in Sahih Bukhari hadith number 5374 and Sahih Muslim hadith number 1202. In the black seed is healing from every disease except death. And alhamdulillah, my routine since around 8 to 9 months is that every morning kalunji, 1 chutki and honey, thoda sa honey. First thing in the morning. Best. People eat at night, people eat in the afternoon, no problem, but in the morning is the best. Then hijama. Unfortunately, many people I met 60 years, 70 years old, hijama पता नहीं, hijama कभी नहीं कराया मैंने. अरे अल्लाह के रसूल तो हमेशा कराया करते, साहबा तो हमेशा करते थे. हिजामा कराना चाहिए हमेशा, 2-3 महीने, 3-4 महीने में जो भी है. There is a dish called nabiz. Dates are soaked in water, raisins or dates. This is mentioned in Abu Dawud and Sahih Muslim, hadith number 2005. Nabiz, पियो नबीज, खजूर जो है पानी में भिगो के रखो रात भर, सुबह में पियो. अल्लाह के रसूल करते थे, ये भी करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. फिर एक जरीद एक डिश का जिक्र है, सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 बुक नंबर 65 हदीस नंबर 329. जरीद इज अ मीट डिश as far as I zareed. Then talbina. This dish is mentioned in Sahih Bukhari volume number 7 book number 65 hadith number 328. Allah's Prophet said it soothes the heart and relieves sadness. Talbina, it is made of barley something, even I don't know about the details of this. It is zareed, talbina, nabiz. This should be part of the Muslim's diet. हमारे घरों का डाइट होना चाहिए.
गेस्ट आते तो हम दूसरे मीठे डेट्स दे देना चाहिए उनको, है ना, ये सब इंशाल्लाह ध्यान रखना चाहिए. देन what should be our approach? Our approach should be that we should know that weight loss is not an overnight thing. लोग हमारे यूथ जिम में जाते एक दिन के अंदर दिन भर देखते कितना बढ़ेगा एक दिन के अंदर. वेट लॉस फिटनेस इज नॉट an overnight. We have to realize that we should be consistent, we should be sincere in our efforts. Allah's Prophet said in Sahih Bukhari, do good deeds which is within your capacity, as Allah never gets tired of giving rewards till you get tired of doing good deeds. तो टारगेट जो है अपना कम रखोगे, भाई हफ्ते के अंदर में 6 पैक एब्स बनाऊंगा, नहीं. डोंट कीप सच टारगेट्स. बी कंसिस्टेंट जितना आप कर सकते हो. डाइटिंग मतलब बिल्कुल कम खाना, ऐसा बिल्कुल मत करना. नहीं तो आप 2 दिन के अंदर डाइटिंग बंद कर दो. कम खाओ, 1/3 पे अभी मत जाओ. फर्स्ट स्टेप थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम खाओ, फिर बाद में इंप्रूव करो. इस तरीके से आप आगे बढ़ो. राइट. सेट योर गोल्स. एक गोल्स रखो और एक फोकस रखो कि ये हफ्ते में या फिर ये महीने में मैं इतना किलो वजन कम करूंगा. कीप योर गोल्स, कीप योर टारगेट. 2 महीने में इतना करूंगा. चेक योर गोल्स, check your fitness, no problem, but your goal should be you can do that. Okay. The prophetic way, the prophet, as with everything, the prophet is the perfect example. His physique was lean, he was incredibly strong. It is mentioned in a hadith that he wrestled to the ground the best wrestler in Makkah. मक्का में जो सबसे बड़ा जो wrestler था उसको अल्लाह के रसूल ने 3 बार नीचे गिरा. And he was at, he in his 40s. He wasn't a person who would gorge on food, who would gulp drinks down. He would sip water, he would eat slowly. He was an organic eater. ज़्यादातर fresh चीज़ें खाते थे. Dates है, milk है, right? It is generally reported that he ate twice a day. Today's dietitians, some dietitians say that थोड़ी देर में खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए. But अगर हम देखेंगे, the sunnah way is eat moderately but keep a gap of around 4-5 hours. पेट को हमेशा कंटिन्यू काम नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट भी करना चाहिए. We should eat when we feel hungry, but due to our busy lifestyle, ऑफिस में कोई काम करता है, लंच आवर उतना ही रहता है, that's okay. But normally we should, भूख लगती है तो फिर खाना चाहिए. ऐसे नहीं खाने का टाइम हो गया अभी तो खाना ही चाहिए, ऐसे नहीं. A good description of his meal was he was moderate eater. He was a semi-vegetarian. You can say semi-vegetarian. इतना ज़्यादा मीट पे ध्यान नहीं देते. जैसे हम लोग सोचते हैं कि गोश्त खाना मतलब दीन का एक हिस्सा है बगैर, तो अल्लाह के रसूल ऐसे नहीं करता. अल्लाह के रसूल he was a moderate eater. He was not an extreme meat eater. मीट को हम समझते, गोश्त को समझते, गोश्त नहीं खाएंगे तो भाई एकदम गुड. Moderate eating, moderately if you eat meat, very good. He taught us, Allah's Prophet taught us not to blow on our food. वो ठंडा होना चाहिए, but उस पर फूकना नहीं चाहिए. And he mostly ate with the hands, not spoon. Okay, even there is a wisdom in that. He used to clean the plate. He used to completely finish all the food, whatever he would eat, whatever food was on the plate. Because it is a source of barakah. There were occasions when the Prophet used to restrict food. Ayyam al-Bid में जो 3 रोजे रखते हैं, फिर Monday, Thursday. Now you can just Google search official websites of doctors, US researchers, scientists, doctors. वो कहते हैं कि intermittent fasting is the best for a human body. जैसे अल्लाह के रसूल नफल रोज़ा रखते थे, अय्याम अल-बीद है, मंडे थर्सडे है, दैट इज़ द बेस्ट. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आपसे बहुत दूर रहेगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो नफली रोज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. ओके, सो ईटिंग फॉल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज. कुछ ईटिंग जो है मुबाह है, कुछ फ़र्ज बन जाती है. इतना भी वीक नहीं होना चाहिए भाई नमाज को उठ नहीं पा रहे, दैट बिकम्स फ़र्ज. मुबाह आप खा सकते हैं, नॉर्मल आपके 1/3 नहीं खा रहे लेकिन 1/3 से ज़्यादा खा रहे हैं,
बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख, तो मुबाह अलाउड है, हराम नहीं है। आप मकरू क्या है, बहुत ज़्यादा खा लिए मकरू, और हराम क्या है जो आपके हेल्थ उससे ख़राब हो रही है, आपकी हेल्थ बर्बाद हो रही है, तो दैट बिकम हराम। तो द बॉटम लाइन इज ईट मॉडरेटली। हम लोग कुछ फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कीटो डाइट, आजकल डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन वो, ऐसे डाइटिशियन, ये हमें कोई लेना देना है। तो एक उसमें का मेरा दोस्त बहुत एक्सपर्ट्स थे, तो उसने बताया कि ये डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा ईट मॉडरेटली, जो भी खाते वही खाओ, लेकिन मॉडरेटली खाओ, सिंपल, दैट इज द बेस्ट। जो भी खाते ईट मॉडरेटली, ईट न्यूट्रिशियस फूड, डोंट ईट जंक फूड, एक्सरसाइज एंड बी कंसिस्टेंट इन योर डाइटिंग एंड योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जिम जाना ही जरूरत नहीं है, यू कैन इवन गो फॉर अ वॉक, राइट, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, half an hour, that's best. If you go for the gym, it's good, but if you don't find time, so you should keep your fit, you should be physically fit, you should see to it that you get some exercise. Now at the end there are some duas for health. Some of the best duas are Allahumma inni a'udhu bika min al-barsi wal jununi wal juzami wa min sayyati al-asqam. Oh Allah, I seek refuge in you from vitiligo, madness, leprosy and all major diseases. Then another dua is one of the best dua. Allahumma afini fi badni, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basri, la ilaha illa anta. Dua is again, there is a bigger dua, same dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wa a'udhu bika min al-faqri, Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabri, la ilaha illa anta. Oh Allah, grant my body health. Allahumma afini fi badni. Oh Allah, grant my hearing health. Oh Allah, grant my sight health. There is no God but you. We should make this dua. This dua should be recited 3 times, after Fajr and after us. Then there is another dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafiya wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Oh Allah, I ask you for knowledge that is of benefit, a good provision, and deeds that will be accepted. There are many duas for health. You will make those duas. And inshallah, if we combine all these dietary habits and exercise and duas, inshallah, we will become physically fit by the grace of Allah, and we should be able to fulfill the responsibility which Allah has placed on us as the Khairul Ummah, the best of people raised up for mankind. So don't, we take it as lightly, physical fitness lightly. Unfortunately, most of our brothers, they're overweight, not obese. Alhamdulillah, they look handsome, good, but that is not fitness. That is not fitness. You should be able to do. You should be run here and there. You can just catch a bus. कुछ भी आपको काम क्विक होना चाहिए. तो वो स्लिम, सब में बेस्ट है, स्लिम, strong, with muscles, so that you fulfill your responsibility, you benefit yourself, you benefit your family, and you benefit the people, your society, and you benefit the ummah, inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.